Hello, everyone. Good evening. I hope I'm audible and visible to all of you. I just need to see if I can see myself or not through the link. Okay. So basically, I hope all of you are doing good. How's the preparation going? Is your preparation up to the mark? First of all, thank you for we have the team of bright medico makers here. They asked me to join them live on a YouTube channel, and they said, "Ki sir, just share some strategies with the students. Last 2 weeks, kya karna hai?" So initially, I said, Manav, the guy who's managing the channel, he said, मैंने उसको बोला कि सर कि यार देखो close to the exam, I don't think too many options should be given. But then I realized, I look at my inbox and I realized that a lot of you are having anxiety at this moment. And so, if I am a student, not a teacher, if I'm a student, what are the things I should be doing and what are the things I should not be doing in the last 2 weeks? And so, it's a very brief session I'm going to have with all of you. So, just waiting for a few more people to join in, and so we can start. So, good evening, everyone. Good evening, everyone. So, let us continue this video afterwards for those who are unable to join right now. This will go up on the YouTube channel, so you can have a look at it there. Let's put things in perspective. Where do we stand right now? For now, uh, the exam today is 12th July. 12th is already gone. Whatever night you can put in, that's a bonus. And your exam is on 26th July. So roughly speaking, less than 2 weeks is the time that you have available. What are the things not to do at this moment? Number one, don't read anything new. Don't read any exotic stuff, any rare syndrome, any rare drug which you have never read about. Because if something is rare and you have not read so far with so much of preparation, it is unlikely that it is so important that it is going to be asked in the exam. And even if you read something new at this moment, unless you revise it, you will not be able to recall in the paper. So, what you cannot recall, there is no point wasting time on that. So, for now, you have to read only and only most important things. Apart from that, in case you have any doubts related to how to plan your preparation over the next 2 weeks, if you are already following any plan, please continue with it. Please continue with it, right? Because जो अपना plan बना जाता है, that is the best plan that is available. Just want to know because I can't see myself. I can only see a small snippet of myself. So am I audible and visible? Just put it in the chat box. I can see the chat box. If I'm audible and visible, so because I'm going to start something important. I don't have a script in front of me, but I wrote the points on a side so that I have a clarity of thought to share with all of you. Okay, great, great. Thank you so much. So let's keep it very simple. We have to get selected on 26th of July. Have we done preparation? Yes, we have done our preparation. Is the preparation going on? Yes, it is going on. Can we do better? Yes, we can do better. Uh, am I feeling anxious? Yes, a bit of anxiety is normal. It is natural at this moment. So there is no student right now who's not feeling anxious. In fact, if there is someone out there listening to this video, and if you feel that you are not feeling anxious, I will be asking you, why are you not feeling anxious? Because this is the time where anxiety will come. But you have to channelize that energy, that anxiety into productivity. Okay. So let's keep it simple. If you are already following a plan, continue following that plan. No need to change it. I'm going to share some suggestions with you. After listening to these suggestions, if you find them useful, you can use them, you can incorporate them in your preparation over the next 2 weeks. In case you have any doubts, I will keep it as an open hall and you are most welcome to ask your doubts. So starting from 13th of July till 25th of July, what I will do if I have to start revision in the next 2 weeks. First of all, I need to realize that I cannot read everything. How much time do I have in 24 hours? Total 24 hours you have. Suppose you sleep for 8 hours. I'm assuming that you are sleeping for 8 hours. You should sleep for 8 hours.
right? A bit of rest is also needed. You sleep for 8 hours, so 24 minus 8, you are left with 16 hours. Out of this 16 hour, you subtract 1 hour for food and related stuff. You subtract 1 hour for going to the bathroom, taking a stroll outside, daily core activities. You take out 1 hour for that. You take out 1 hour more for wasting time. Everyone wastes time, then we feel guilty about it, but that's how humans are. So 1 hour we will take out of it, that we are wasting our time as well, right? 1 hour of wasting. Kaisa wasting? Thinking about kya hoga us din, looking at motivational videos, just looking at the reels, looking at those spooky videos. That's human, that's natural, and in fact that is needed also. So out of 16 hours, you subtract 1 hour of food, 1 hour of bathroom, and roaming around and getting some stuff, and 1 hour of wasting your time. How much time you still have? 13 hours. Let us assume that you take very, very lengthy hours, lengthy breaks in between them. Still, you are left with quality 10 to 11 hours. 10 to 11 hours per day for the next 2 weeks. Trust me, you have enough time. For those people who say, कि sir, time नहीं है, time हमेशा होता है. You always have time available. मैंने इसके बारे में वीडियोस भी डाले हैं, इसके बारे में रील भी डाला है. पार्किंसन लॉ, our mind adapts according to the time which is available. Then people will say कि सर माइंड सैचुरेट हो जाता है. माइंड सैचुरेट क्यों होता है? आई विल टेल यू. Because you are not reading with a purpose, with a plan. What you are doing is you are opening the register, the copy, the workbook, which you have read at least 7 to 8 times, but you are just now again going through it again, and you are going with that pace, the same pace that was there 2 weeks back. So now you are feeling FOMO for the subjects you are not reading. At the same time, you are getting saturated because you are tired and frustrated of seeing the same things again and again. How to overcome that? Read with a purpose. So I told you how much time you have per day, roughly speaking. Roughly you have between 10 to 12 hours. Okay. Out of this 10 to 12 hours, let us say 10 hours, right? If you can take out more time, you have a bonus time. Let us say you are reading 10 hours in a day, and this 10 hour, nobody can take from you. This 10 hours, only you and your syllabus is there. About 1 to 1.5 hour, you have to solve MCQs. No days should go where MCQs are not getting solved. I will summarize whatever I'm saying in the end. So 1.5 hours roughly should be devoted towards MCQs. Now, which MCQ? First preference is PYQ. PYQ from 18 to 24. If you are solving the questions and you feel that 90% of PYQs are going right, then you can go to custom module. If your PYQ score is less than 80% strike rate, accuracy is less than 80%, PYQ will give you more benefit. Direct question nahi aayega, but PY topic will come, and your brain will, it will have that familiarity with the topic. If you have read it in the last 2 weeks before sitting in the exam, that familiarity helps you in ruling out options. So out of the 10 hours that you have, about 1.5 to 2 hours you have to do MCQs. Which MCQ? PYQ if you have not done before, PYQs if your accuracy is less than 80%, but custom module, neat PG questions, other things you can add, other sources of MCQs you can add in case you are, and whether you should do it like full paper or you should do it subject wise. For now, you should stick to subject wise. Full paper, if you have to do, it is better to do a mock exam. Remaining 8 hours is there for you. That 8 hours is the theory hours that you have. Out of that theory hours, you divide it into two parts. 4 hours and 4 hours. Let's say 4 hour is part A and 4 hours is part B of your day. Part A, 4 hours, I will be reading a big subject like medicine, but I will not read medicine entirely. What I will do is I will look at medicine, which is the most important system of medicine. The most important system of medicine is cardiovascular system. So what I will do is, let us say we are starting from Sunday. Let us say, है ना? मैं इसको summarize करूंगा if you are feeling, if you are joined just now or if you are feeling a bit confused. Try to understand. Suppose you start from Sunday. You get up in the morning, you do whatever you have to do. You know that 24 hours later, by the time Monday comes, in the last 24 hour आपने क्या करना है? 8 hours का sleep, whatever time wastage, etc. you have to do, you do that. 1.5 to 2 hours of
MCQ practice you have to do. Any MCQ going wrong, you have to mark it. Explanation, you have to read it. Question going right and you know the answer, don't need no need to read the explanation. Don't waste your time reading explanation at this moment. Only read explanation kiska if the answer is going wrong. See why did it go wrong and mark it for review after 1 week. Okay. 8 hours is available to you. Now divide this 8 hours into two parts. Part A, part B. Part A and part B के बीच में 1 घंटे का break होना चाहिए. Right? Now part A will be a big subject. Part B will be a small subject. Now subjects are of three types. Very big subjects, medicine, surgery, OBG, and PSM. Medium level subjects, which includes microbiology, pathology, pediatrics, ENT, ophthalmology, biochemistry, anatomy, and then short subjects. Okay. Short subject will require only 4 hours. You cannot give more than that. Uske baad you are not supposed to see that. So 4 hours of short subject you will do. Okay. 4 hours of short subject you will do. Just a minute. There is a call coming in between. So 4 hours of short subjects you will be doing. Remaining 4 hours you will be devoting towards either a big subject or a medium level subject. If it is a big subject, you will be doing 4 hours today, 4 hours tomorrow, and 4 hours day after. Big subject is done. I'll give an example. If you are decide to do medicine, what how you will do medicine? Cardiovascular system on day one because it's the biggest and the most important one. 4 hours of cardiovascular system on Sunday. Then Monday, respiratory, that is pulmo, nephro, and some short one. Maybe you can add GI and hepat. Day 3, endocrine, rheumat, and whatever miscellaneous thing is left. Medicine is done. Now you will ask me, ki, sir, 4 hour, 4 hour, 4 hour, 12 hours of medicine, इसमें कैसे होगा? Do you have time available? The answer is no. Trust your brain. Don't read cover to cover. What to read should be guided by your PYQ practice. How? Any topic repeated at least once or more than once, 2 or 3 times in your PYQ, only that topic you have to read from your notes. No random information from internet, only from your notes. What it will do is you will find that there is a pattern. Suppose you are reading neurology in medicine, you will find that there is always a question asked from Parkinson disease. There is always a question asked from Alzheimer disease. There is always a question asked from stroke. Either it is a hemorrhagic stroke or it is a ischemic stroke. Ischemic stroke में वो क्या पूछेगा? They will be asking you thrombolysis. In hemorrhagic stroke, they will be making a case scenario. Hypertensive old age person gets this, and they will ask you what is the next step in management, or they will give you a photograph and ask you kya nahi karna, and your answer will be thrombolysis nahi karna in hemorrhagic stroke. You understand? Already you know ki kya important hai. Now it is the time to have a look at them, get that confidence, get that accuracy in limited time which is available. The catch is you should see everything in the last 2 weeks before you sit in the exam, and you should have that confidence and accuracy. कवर टू कवर पढ़ेंगे तो मेडिसिन में कभी एक्यूरेसी नहीं आएगी. Right now, selected topics, if you read close to the exam, you will have a sense of completion and you will have better accuracy if you sit in the exam. क्या रेयर चीज आ सकती है? अब इसमें होगा क्या? फोमो होगा. सर एनपीएच पे भी तो क्वेश्चन आ सकता है. नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस आ सकता है. But do you have the time? Has it been asked in the recent papers? The answer is no. तो क्या करेंगे? पार्किंसन पढ़ेंगे लेकिन एनपीएच का रिस्क. ये छोटा रिस्क सब लेते हैं. Everyone takes in their life. You will be taking in FMG, you will be taking tomorrow in NEET PG, you will be then taking in super specialty, and then in real life also you will be taking. You can't do everything. You can't spend time with your friends and family and your girlfriend or boyfriend or whatever. You have to pick, right? So some time for the family, some time for your love life, and a bit of time on the weekends for your friends. उसके बाद जो रैंडम नेबर्स हैं उसके लिए टाइम मिले तो अच्छा है, नहीं मिला तो नहीं मिला. We can't do everything, we can't cater to everything, you can't read everything, you can't revise everything. तो इसीलिए what I meant, what I said was बड़ा सब्जेक्ट. कौन से बड़े सब्जेक्ट? मेडिसिन, सर्जरी, ओपीजी, पीएसएम. इसको क्या करना है? 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. एक दिन में नहीं पढ़ना. डोंट रीड इन 1 day.
4 hours one day, 4 hours second day, 4 hour third day, 12 hours subject is done, right? इसके एक्सेप्शन पे आऊंगा मैं. What about middle level subject? Medium level subject like pediatrics. 4 hours one day, 4 hours second day. That's it. Got it? Only 8 hours. What about short subject? Only 4 hours. इसका मतलब if Sunday I have to read for 8 hours of theory, I would be reading 4 hours of cardiovascular system. In the evening, I would be reading 4 hours of dermatology. Dermatology I will not see after this, right? Dermatology done, cardiology done. Agle din neurology along with endocrinology of medicine 4 hours. In the evening I'm doing psychiatry. So you have done the epilepsy part in the morning. Now you are doing it, all the other CNS drugs and manias and schizophrenias and lithium ka side effects. Topic is done. You have better retention. And then third day you are say medicine ho gaya. तो अब आप क्या करोगे? Now you will take up 4 hours of pathology, 4 hours of pharmacology. Then again 4 hours of pathology, 4 hours of pharmacology. मैं आपको लिखन written में क्यों नहीं दे रहा हूँ? Why am I not giving it in writing? I will give it to you in writing also if you say. I will post it on my Telegram group as well. The thing is, you have to make the program yourself, because I don't know what is strong and what is weak for you. What is your mindset? What are the areas you have not touched before? So those areas will need more time. If you have done everything and the next 2 weeks, this is a template. A template you can edit, a template you can change. You understand? So rule बड़ा simple है. Subject आपके 3 तरह के हैं. There are 3 types of subjects: big subject, medium level subject, short subject. Big subject, 8 hours you have to give over the next 2 weeks, total 8 hours. Shorts, medium level subject, big subject, 12 hours you have to give, medium level subject, 8 hours you have to give, and short subject, 4 hours you have to give. And daily 2 hours of MCQ. ये minimum है, इसको कर जाएंगे अच्छे से, and you have been a good student in the past, you have a very good fighting chance. Now, अब इसको change कैसे करना है? Suppose you ask me कि sir, my medicine is okay, my OBG is okay, but my surgery is weak. तो मैं क्या करूंगा? What I will do now is, surgery में I will have to give 4 hours more. How do I give 4 hours more? If I take out from some other subject, that will compromise that subject. तो उसके लिए क्या करूंगा? Time waste कम करूंगा. 8 hours की जगह 7 hours सोऊंगा. 1 घंटा नहीं नहाऊंगा. बाथरूम में जाऊंगा तो रिवाइज करूंगा. You get it? So take out 1 hour per day extra so that you can fit 4 hours of surgery more if it is your weak subject. If it is your weak subject. Right? And then finally, revision कैसे करना है? जब आप ये कर रहे होंगे, I would advise one thing. ऐसे randomly चलते नहीं जाना. After 1 week, whatever you have read, take a break of half day and just flip through the pages which you have done in the last few days. उसको एक बार नजर से निकालना है. उससे क्या होगा? Mini revision हो जाएगा. Having a look at the notes 1 week later is also a mini revision. ये बड़ा proven तरीका है. People try it all the time. I have done in my preparation days. People do it right now also. तो अगर आपका already एक plan चल रहा है, if you already have a plan going on, stick to it. But if you don't have a plan and you are doing random things, this is a plan that you can adhere to. अमर थोटे, स्पैम करने से मैं जल्दी आंसर नहीं करूंगा. मैं टाइम जब आएगा और क्वेश्चंस को टेकअप करूंगा तब आंसर करूंगा. देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज पेशेंस ना. ज्यादा स्पैम करने से टाइम वेस्ट होगा. मैं आंसर तो नहीं करूंगा. आंसर मैं तब करूंगा जब मैं चैट बॉक्स को ओपन करूंगा, बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स आई मेड अ चार्ट ऑफ देम टू डिस्कस विद यू, बट आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी स्मार्ट, एंड ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट पीपल. It is time to be responsible also. How responsible? Responsible for your life. Next 2 weeks is the most important phase of your life. Most important phase of your life. तो इसको give your best shot. It's okay, Amar. Don't worry. मैं थोड़ा थोड़ा leg pulling करता हूँ. अगर आपने मेरा कभी क्लास लगाया है, it's okay. But the point I'm trying to say is, आप लोगों को पैनिक नहीं करना. पैनिक क्या करते हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप? गलतियां क्या क्या कर रहे हैं लोग, मैं भी आपको बताता हूं. सी इफ यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक और नॉट. आप क्या करते हो? आपको रियलाइज होता है, अरे
नेफ्रो नहीं पढ़ा, then you open nephro, you start reading nephro, you read acute kidney injury, but then you realize मजा नहीं आ रहा, then you leave it, you start solving some 20 MCQs on a Telegram group, then somebody comes up with a YouTube free session, you go there and start listening to it, then in the evening you are thinking 8 hours have passed and I have not done anything, and then you go into a spiral of depression, and then you message your mentors or your teachers or your seniors, क्या करूं, मेरा आधा दिन वेस्ट हो गया. ये नहीं करना है. Random things create chaos, even if you know they create a sense that you don't. On the other hand, if you do things in an orderly way, you are confident, and even when you have only read about two options in the question, when you sit in the exam you will be able to rule out the two option, और जो दोनों को में से सही मार्क करेंगे, there is a very good possibility वो सही हो जाए. So the point I'm trying again and again saying is, number one, if you have a program already, if you have a schedule already, stick to it. Number two, in case you don't have a schedule, you can follow what I said. What did I say? Total 10 to 12 hours per day with enough rest and enough breaks. Out of this 10 to 12 hours, about 2 hours of MCQs per day. Which MCQ? PYQs should be preferred if you have not done them before, or if your strike rate is less than 80%. You can add need PG MCQs. Amar Thote, you can add need PG MCQ from 2021 till 2024 if your FMG score of PYQ in that subject is good. If you feel कि PYQ का control आ गया है, I'm fairly confident, then you can add a NEET PG MCQ. Otherwise, FMG MCQ per se is more important, right? And 8 to 10 hours daily reading आपने करना है थ्योरी का. इस थ्योरी के अंदर you have to divide into two parts, take two subjects together. 4 to 5 hours of one subject, 4 to 5 hours of another subject. If it is a big subject, you have to give total 12 to 14 hours divided over multiple days. If it is a medium level subject, you have to give about 8 to 9 hours depending upon the time that you have available and the strength that you have, the confidence that you have. For short subject, 4 to 5 hours per day is the maximum that you can give. तो अगर कल डर्मेटोलॉजी पढ़ लिया, उसके बाद कब देखना है डर्मेटोलॉजी? एग्जाम में जाने से एक दिन पहले जो आज पढ़ा था, जस्ट हैव अ लुक एट इट बस, because you don't have the time. But before you sit in the exam, you have to look at every important previous year topic. Rule मैं बता रहा हूं, any topic repeated 2 times or more, you have to read at least once. You have to at least see the topic even if you don't remember anything. देखो कोई भी टॉपिक है, मान लो एक टॉपिक है जो आपको अच्छा नहीं लगता, मान लेते हैं यू डोंट लाइक, क्या कौन सा टॉपिक उठाए, मान लो यू डोंट लाइक कार्सिनोमा इसोफेगस, राइट? रैंडम टॉपिक उठाया मैंने, कार्सिनोमा इसोफेगस सर्जरी में भी आता है, मेडिसिन में भी आता है. क्या पढ़ना है इसके बारे में? चार चीजें पढ़ लो. कार्सिनोमा इसोफेगस पे क्वेश्चन आ सकता है. कैसे क्वेश्चन आएगा? ओल्ड एज पर्सन, उसको डिस्फेजिया हो रहा है जो प्रोग्रेसिव है, उसको सॉलिड्स लिक्विड्स के लिए भी हो रहा है, और उसको वेट लॉस भी हो रहा है, तो कार्सिनोमा इसोफेगस. बेरियम में क्या दिखेगा? ये अपीयरेंस दिखेंगे. इररेगुलर पैटर्न होगा, रेड टेल होगा, बर्ड बीक होगा. इररेगुलर फीलिंग डिफेक्ट इज द वर्ड वे हियर, राइट? रेगुलर फीलिंग जो होता है वो बेनाइन में होता है. सो इररेगुलर फीलिंग डिफेक्ट कीवर्ड है जिसको याद रखना है. पूछेंगे प्रोग्नोसिस क्या है? खराब है. लिम्फ नोड्स मेटास्टेसिस होता है. पैलिएटिव थेरेपी इज व्हाट यू डू. तो अगर देखो तो कार्सिनोमा इसोफेगस में ना काम का चीज क्या है? एक्चुअली 4 या 5 पॉइंट है. तो आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना, उसका हिस्टोलॉजी नहीं पढ़ना है. पढ़ के भी क्या फायदा, वो आएगा ही नहीं एग्जाम में. सो ये कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू से पता चलेगा. एंड सबकॉन्शियसली मोस्ट ऑफ यू नो कि क्या इंपॉर्टेंट है. वो क्या होता है कि लिखा होता है हमारे सामने, तो रोक नहीं पाते हैं खुद को. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू टेम एंड लेट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर टॉपिक्स गाइड यू इन प्रिपरेशन, राइट? और अगर आपको एक मोटा मोटा फ्लो चार्ट जैसा चाहिए, आई विल जस्ट मेरे अपना जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऊपर जो मैंने बताया है, इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, मुझे फ्लो चार्ट बनाने अच्छे लगते हैं, मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है, तो मैं उसका एक बनाकर डाल दूंगा. बट आई होप यू हैव गॉट द हिंट. इन केस देयर इज अ सब्जेक्ट दैट you feel is weak, give 10% more time to it, but don't take out time from the other subject. How will you give 10% more time? By
cutting short the time that you are spending, maybe half an hour less of MCQ and half an hour less of sleep, or half an hour less of wasting time scrolling the reels, right? Do it and you should be able to crack the exam. क्या जीटी देना है? एक जीटी का टाइम बचा है. If you have to give, don't give after 21st. 21st के बाद नहीं देना. देना चाहते हैं आपकी मर्जी है, your life. India is a free country, but I would advise 12 से लेके 21 तक के बीच में एक देना चाहें, दो देना चाहें, दे सकते हैं. आफ्टर 21st नहीं देना, राइट? आगे की बात करते हैं. अब मैं चैट बॉक्स की तरफ देखूंगा. Whatever doubts you have, please shoot at me. अमर, सर अभी कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आता, बहुत डर लगता है। अमर, ऐसा ही लगता है। देखो एग्ज़ाम से पहले ऐसा ही लगता है। देखो थ्योरी पेपर नहीं लिखना है वहाँ पर। You don't have to write a theory paper. You have to sit, read the question, 4 options are there, you have to mark. सिंपल सा चीज़ पूछ रहा हूँ। किस वायरल इन्फेक्शन में सेल्स के अंदर आउल आइड न्यूक्लियाई अपीयरेंस मिलता है? किस सेल में? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पढ़ा नहीं आपने अभी? मुझे पता है, पहले का पढ़ा हुआ है। किस में मिलता है? टेल मी द आंसर। टेल मी द आंसर। सीएमवी? देखा? तो सीएमवी ऑप्शन में होगा, उसको मार्क कर देंगे। मैंने आपको ऑप्शन भी नहीं दिया। अगर मैं वहां लिख देता सीएमवी, रूबेला, चिकन पॉक्स एंड मीजल, तब भी आपका आंसर क्या होता? सीएमवी। तो ये चीज आपको आती है. You know enough to pass in the exam. You just need to revise the important things in a precise manner. जब ये क्वेश्चन आएगा कि आउल आई अपीयरेंस किस में दिखता है, 4 ऑप्शन होंगे, सीएमवी लिखा होगा. All you need to do is identify and mark in the exam. तो डोंट से कि मुझे कुछ नहीं आता. ये तो माइंड का वहम है कि कुछ नहीं आता. जब आप बैठोगे तो आपको आ जाएगा. आई एम अ पीडियाट्रिशियन. आपको क्या लगता है मेरे को सारी दवाइयों के नाम याद है? नहीं याद. कुछ देयर आर सर्टेन डिजीजेस मेरे को 50 साल नहीं हुए, सॉरी, इतना तो मेरा एज भी नहीं है. 50 महीने हो गए हैं, आई वुड से, मैंने देखा भी नहीं है उनको. बट मेरे सामने आता है, मैंने कभी ना कभी पढ़ा है. एंड व्हेन आई रीड एंड आई लुक एट द रिपोर्ट्स, द थिंग्स कम टू मी एंड आई एम एबल टू मेक द डायग्नोसिस. तो नोबडी कैन रिमेंबर एवरीथिंग. नोबडी. नोबडी. आपको इतना जानना है और ये सोचना है. अपने उन सीनियर्स की शक्ल याद करो जो आपको पता है कि गुड फॉर नथिंग थे. जो बोलना नहीं है ना, मगर गुड फॉर नथिंग थे, हमें पता होता है, राइट? और ये सोचना है, अपने आप से बात करनी है. से टू योरसेल्फ, ये पास हो गया तो मैं क्यों नहीं? You understand? That's how human mind works. Don't say it, that's rude. But end of the day, a bit of pep talk, a bit of self-talk is also very, very. तो now, अब चैट के आंसर्स लेंगे. दीपिका कह रही है हाउ टू रिवाइज फास्ट सर. दीपिका, वेरी सिंपल. कवर टू कवर नहीं पढ़ना. एवरी टॉपिक यू नो. इफ आउटलाइन अपीयरेंस लिखा है सीएमवी में, इसको नहीं पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है सीएमवी के बारे में. यू अंडरस्टैंड? प्रीवियस ईयर टॉपिक 2 times or more repeated in PYQs of FMG. Read from your notes. Topics which have not been asked but are just lying there, now is the time you have to take a calculated risk. उसको छोड़ सकते हैं. That is the only way. And don't try to write as you are reading. Just flip the pages. 2 fast readings are better than 1 detailed reading at this moment. Not in general, but at this moment. Sir, GT score 140 to 160 के बीच में रहता है. Analyze the GT. 5 subjects you pick up which are weak. Give them 10% more time so that your score crosses the threshold of 160. बेती अनुवर इज आस्किंग, ऐसा भी तो क्वेश्चन आएगा, कुछ भी नहीं आता जैसे न्यू क्वेश्चन, तब क्या करें? कैसे तुक्का लगाएं? देखो, तुक्का लगाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं. मेरा तरीका क्या है? मुझे तुक्का लगाना वहां अच्छा लगता है जहां पर मैं एक ऑप्शन को रूल आउट कर पाऊं. जिस ऑप्शन के अंदर नेवर 100% ऑलवेज होगा, वो कभी भी एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगी, तो ऐसी ऑप्शन को रूल आउट कर सकते हैं. हाँ, अगर फैक्ट बेस्ड चीज आ गई है तो सोचना है कि आपके लास्ट क्रश का नेम या सरनेम किस लेटर से शुरू होता है, या अगर उसका नाम मान लो जेड से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है, तो उसमें बी ज्यादा आता है, सी ज्यादा आता है, डी आता है कि ए आता है. या टेक द हेल्प ऑफ गॉड, थिंक ऑफ हिम एंड जस्ट मार्क एनीथिंग. बिकॉज फैक्ट बेस्ड चीज में कुछ नहीं कर सकते. अगर मान लो क्वेश्चन आ गया वहां पे कि इनक्यूबेशन पीरियड मम्स का कितना है, और ऑप्शन क्या है? 14 डे, 15 डे, 16 डे, 17 डे, और आपने मम्स पढ़ा ही नहीं है, तो क्या कर लोगे इसका? क्योंकि देखो, अगर आप नोट्स खोलो ना, तो वहां 14 टू 16 डे लिखा है, टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, पर एग्जामिनर ने डाल दिया, तो क्या कर लोगे इसका? कुछ नहीं कर सकते. तो जो मन में आ रहा है मार्क कर दो.
राइट? दिस विल नॉट डिसाइड योर पास और फेल। पास और फेल कौन डिसाइड करेगा? स्ट्रोक का क्वेश्चन सही किया कि नहीं, मैरस्मस का क्वेश्चन सही किया कि नहीं, माइलस्टोन सही किया कि नहीं, आपका सर्जरी में ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट के बिनाइन ट्यूमर्स के क्वेश्चन सही किए या नहीं। हर बार क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट से, एक कैंसर आता है ब्रेस्ट का, एक बिनाइन ट्यूमर आता है, फाइब्रोएडिनोमा पूछ लेंगे, सीरस डिस्चार्ज, मिल्की डिस्चार्ज, पता है, उसके बाद भी ना रिवाइज ना करें तो फिर किसकी गलती है? रिवाइज करना है। रेयर चीज नहीं पूछेंगे, वो रेयर चीज मान लो एक बहुत ही वो रेयर सार्कोमा पूछ लें ब्रेस्ट का, वो किसी को भी नहीं आता, right? So that will not decide your pass or fail. You have to look at the mind of the examiner. Examiner's mind works in a certain way. 300 questions. Examiner does not want कि anyone should score 300 out of 300. तो examiner क्या करता है? Out of these 300 questions और 19 सब्जेक्ट है, हर क्वेश्चन में मिनिमम 1 एंड अप टू 2 ऐसे क्वेश्चन डालता है जो या तो एम्बिगुअस है, या जिसका स्टेटमेंट बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड है, या ऐसा टॉपिक है जो आपकी किताबों में है ही नहीं, बिकॉज मेडिसिन वर्ल्ड इज वेरी वास्ट। तो होगा क्या? आप इस क्वेश्चन से डर जाएंगे। नहीं, आपने डरना नहीं है, क्योंकि एंटायर पीडियाट्रिक्स के अंदर या एंटायर मेडिसिन के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन ऐसे हैं? 2 या 3। उनको छोड़ दो, उसमें भी तो तुक्का सही होगा। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग एक्सपेक्टेड वंस? इट इज द रिमेनिंग एक्सपेक्टेड वंस वेयर यू आर टारगेटिंग। यू आर अ इंग्लैंड प्लेयर, जसप्रीत बुमराह इज बॉलिंग टू यू, तो आप क्या करोगे? विकेट बचाओगे, क्योंकि आपको पता है उसके बाद फिर प्रसिद्ध कृष्णा आएगा या शार्दुल ठाकुर आएगा। नथिंग अगेंस्ट देम, इंडियंस हैं, बट मैं इंग्लैंड प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, है ना? तो मैं वहां पर हिट करूंगा। सो देर आर सर्टेन एरियाज इन एफएमजी वेयर स्कोरिंग गोज हाई। पैथोलॉजी इज वन एरिया। पीपल हु थिंक कि पैथोलॉजी खराब है और पीएसएम खराब है और उसके बाद भी हम एग्जाम में बैठ जाएंगे, रिस्की है। तो अगर आपका पैथोलॉजी और पीएसएम रिस्क थोड़ा सा वीक है, except biostats part, try to work 10% extra on these. Somebody was asking me pharma कैसे पढ़े? Only expected areas. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी गूगल सर्च नहीं करनी। अगर वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ाई गई है तो ही करनी है, अगर पीवाईक्यू में पूछी गई है तो ही करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पर्टिकुलरली सीएनएस ड्रग्स, एंटी माइक्रोबियल, डायूरेटिक्स, आपके फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स एंड प्रो ड्रग्स, ये 4 या 5 टॉपिक है, एंड एंटी डायबिटिक ड्रग्स छठा। ये 5 या 6 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप देखना, अबाउट 1/4 25 to 30% फार्माकोलॉजी यही 5 या 6 एरियाज होते हैं। आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत वास्ट है। एंटी माइक्रोबियल बहुत वास्ट है, लेकिन आप ये सोच के देखो कि क्या एग्जामिनर आपसे बेंजाथिन पेनिसिलिन जी की हाफ लाइफ पूछ रहा है? नहीं। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? पेनिसिलिन क्या होते हैं? बीटा लैक्टम होते हैं। कहाँ काम करते हैं? ग्राम पॉजिटिव पे काम करते हैं। कौन सा एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन है? ये आ चुका है एफएमजी में। तो ये याद करना है, पेनिसिलिन खत्म, आगे चलो। यू अंडरस्टैंड? डोंट ट्राई टू ओवर रीड थिंग्स विच आर देयर इन योर नोट्स। लेट योर पीवाईक्यूज एंड पीवाई टॉपिक्स गाइड यू। दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से। और बताओ, और क्या डाउट्स हैं? जीटी में स्कोर आ रहा है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लग रहा है कि जीटी में भी तुक्का ही लग रहा है। फ्रेंड्स देखो, इसका तो एक ही तरीका है, द डे यू सी योर रिजल्ट एंड यू गेट पास्ड, that is the only day that you will, if you are getting a good score in GT, why would you not score in the actual exam also? So have faith in yourself. One of my senior told me he did PYQ only 4 times, he got 159. See Suraj, you have to understand, only PYQ is a risky game. Leaving PYQ is a sure shot disaster game. छोड़ना नहीं है, लेकिन सिर्फ कर लेने से सिलेक्शन नहीं है। हाँ, अगर छोड़कर जा रहे हैं फिर तो बड़ा मुश्किल है, इफ इट इज अ इजी पेपर, बिकॉज वी डोंट नो हाउ द पेपर इज गोइंग टू कम। एक चीज और के लिए तैयार रहना, हाँ, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो एक चीज के लिए। बाकी इस बारे में मैं और राजीव सर दोबारा आएंगे। वी विल बी कमिंग लाइव ऑन 15th। राजीव सर इज ट्रैवलिंग टू कनाडा, so he was giving me a call right now, मैं सर का कॉल कट कर रहा था। तो सर विल बी जॉइनिंग फ्रॉम कनाडा एंड आई विल बी जॉइनिंग फ्रॉम हैदराबाद। तो हम दोनों एक सेशन करेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे लास्ट एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी के बारे में, एंड लास्ट वीक रिवीजन, और यू नो क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको आपने नजर से एक बार निकालना है, राइट? तो वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट अस फोकस ऑन द थिंग दैट वी कैन डू, बिकॉज वी हैव 2 वीक्स अवेलेबल। अब मुझसे कोई पूछे कि सर मेरा एक सब्जेक्ट है मैंने देखा ही नहीं है, तो पहली चीज तो ये कि यार क्या कर रहे हो। बाकी अगर नहीं देखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके।
लड़ना तो है, एग्जाम तो देना है, बाकी 18 तो किए हैं ना। अब इस सब्जेक्ट को छोड़ के जाएं या बाकियों को करके जाएं, दोनों करने हैं। कैसे? इस सब्जेक्ट के पहले तो पीवाईक्यू रटने हैं 18 से 24 तक, राइट? और 3 दिन के बाद उनको दोबारा से रिवाइज करना है, फिर 1 हफ्ते के बाद दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि 2 बार नहीं देखोगे तो याद नहीं होगा। फिर देखना, जब आप पीवाईक्यू कर रहे हो, यू विल फाइंड दैट वही वही रूल, जो 2 बार से ज्यादा आ गया वो टॉपिक्स को पढ़ लेना। अगर अनटच सब्जेक्ट है, 10 टॉपिक उठा लो जो 2 बार से ज्यादा आए हैं, पीवाईक्यू 18 से 24 रट लो। इतना ही कर सकते हैं। अगर इसको छोड़ ये नहीं करके जाएंगे और बिल्कुल अनटच सब्जेक्ट होगा तो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अगर ये भी कर जाएंगे और थोड़ा सा बाकी के 18 सब्जेक्ट ठीक है, भगवान ने साथ दिया है, थोड़ा सा आपका एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल अच्छा है, यू विल गेट थ्रू। बिकॉज मैटर क्या करेगा? मैटर ये नहीं करेगा कि आपने तैयारी कितनी की। दैट इज हाउ लोग कहते हैं लाइफ अनफेयर है। लाइफ इज ऑलवेज अनफेयर। लाइफ अनफेयर है, हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती। लाइफ इज अनफेयर। बॉलीवुड एक्टर्स को पद्मश्री पद्म विभूषण मिल जाता है, राइट? रैप स्टार्स को मिल जाता है, श्रेया घोषाल को नहीं मिला। यू अंडरस्टैंड? सो लाइफ इज नेवर फेयर. Nothing against people who have got, but what I'm trying to say is that sometimes you will feel undeserving people are getting selected, sometimes you will feel I deserve. If you deserve, break the queue, enter, and get your seat. Nobody's stopping. Read in a proper way, identify your weakness. Everyone has a weakness. I had a weakness. मैं ये एग्जांपल इतनी बार बता चुका हूं कि आप लोग बोलो, कुछ लोगों को शायद डीजा वू होगा, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। मैंने नीट पीजी का एग्जाम दिया था। उसको नीट पीजी नहीं कहते थे, नीट पीजी का नाम उसका बाद में पड़ा है। तो नीट पीजी का उसको एआईपीएमटी कहते थे। तो उसके अंदर मेरा स्कोर, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट, जब आप पढ़ रहे होते ना कॉलेज में, पढ़ते पढ़ते आप दे देते हो, तो मैं इंटर्नशिप करते हुए ही दिया था। तो आपको इंटर्नशिप करते हुए लगता है आप बड़े तोप हो, आपको बहुत आता है, क्योंकि दिया नहीं एग्जाम। तो मैंने जब दिया था तो आई गॉट अ रैंक ऑफ 1108, ऑल इंडिया रैंक 1108। तो लोगों को लगा बड़ा अच्छा रैंक है, बट मुझे पता था कि मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं है और जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा। और मैंने जब एनालाइज किया तो मेरा एनालिसिस क्या था? मैं ऑप्था अवॉइड करता था, पीएसएम अवॉइड करता था, ओबीजी अवॉइड करता था, और वही चीजें मैंने रिवाइज नहीं करी। आप कितना भी मेडिसिन पढ़ लो, वो कभी भी आपके ऑप्था ओबीजी को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके कुछ वीक्स के बाद एम्स का एग्जाम हुआ, मैंने इन 3 सब्जेक्ट पे काम किया, लेकिन एम्स का एग्जाम बहुत जल्दी आ गया। एम्स का, आप उसको आईएनआईसीटी कहते हैं। तो इंप्रूव हुआ रैंक, मतलब आई गॉट इनटू टॉप 100, बट स्टिल आई वाज नॉट गेटिंग अ सीट ऑफ माय चॉइस। और काम किया, 6 महीने के बाद गॉट थ्रू। यू अंडरस्टैंड? मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैंने किया, मेरे से ऊपर भी थे। ऐसा नहीं है कि मैं टॉप 10 में था, मेरा रैंक 14 था, 13 लोग मुझसे ऊपर भी थे। तो आपके ऊपर भी लोग होंगे, आपके नीचे भी होंगे, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, एंड आई ग्रेसफुली रिटायर्ड फ्रॉम दैट। एंड द लर्निंग पॉइंट फॉर मी वाज, आप एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, इट विल नेवर कंपनसेट फॉर अ सब्जेक्ट विच इज अनटच्ड। सो बेयर मिनिमम क्या करना है, बाकी सब्जेक्ट करो। अब मुझे एंड में क्या हो गया, एग्जाम वॉज देयर, 1 वीक टू गो, एंड मुझे ऑप्थेल्मोलॉजी नहीं आती। अब नहीं आती तो नहीं आती, अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरे को कभी समझ नहीं आया, है ना? स्ट्राबिस्मस टू बिस्मस नहीं आता है मेरे को समझ में। तो मैंने क्या किया, मेरे मेंटर थे उस समय, अब वो पढ़ाते नहीं है वो। सो ही टोल्ड मी कि यार एक काम कर, तू स्ट्राबिस्मस के 10 पॉइंट याद कर ले जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, और पीवाईक्यू जितने आए हैं स्ट्राबिस्मस के और रेटिना के, रट्टा मार के चला जा, कम से कम रिपीट गलत नहीं होगा। एंड डू यू नो कि 2 क्वेश्चन आए थे, एक रेटिना से आया, एक स्ट्रेबिस्मस से आया। रेटिना से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के ऊपर को आया था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आई। दोनों रिपीट क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन थे। अगर मैं छोड़ के जाता, 2 क्वेश्चन गलत का मतलब मैं गेम से बाहर, और 2 क्वेश्चन सही, आई एंटर्ड इनटू अ ब्रांच ऑफ माय चॉइस, सीट ऑफ माय चॉइस, चीजें सही होती चली गई। सो छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट अनटच्ड है किसी तरह से, अल्ट्रा अल्ट्रा रैपिड रिवीजन उठा लो, कोई क्विक क्विक रिवीजन प्रोग्राम उठा लो, उसमें से 10 या 12 टॉपिक उठा लो और पीवाईक्यू रट लो, यू विल हैव अ फाइटिंग चांस। बट एट द सेम टाइम ये नहीं कि 5 दिन वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नहीं। मैक्सिमम यू कैन गिव, if there is an under subject, is about 7 to 8 hours to that subject, divided over multiple days, and then see once before the exam. Right? This is in response to the questions that you are asking. और बताओ, और पूछो।
149 से 150 आ सकते हैं, पीवाईक्यू करने से सूरज आ तो सकते हैं, बट अगेन डू यू वांट टू टेक दैट रिस्क कि स्कोर ऐसा हाथ काम पर है, 140 51 बन रहा है एक रिकॉल के हिसाब से, दूसरे से 149 बन रहा है. डोंट बी इन दैट सिचुएशन, डोंट लेट दैट सिचुएशन. देयर आर 2 weeks to go. Okay, Deepika, I'll try to say in English. Just got carried away. Medicine you have not done. Okay, if you have not done medicine, if you have any rapid revision or quick revision program, do that. If you have not done anything at all, go to my YouTube channel, have a look at the 7 or 8 videos are there, have a look at them, and one revision video on leukemias and hematology I will be putting up. It will go live on Monday, so just have a look at it. At least you will have a fighting chance, and these are doable videos, very short videos, doable videos. On रोमिंग निखिल इज सेइंग सर ऑनलाइन क्लास के अलावा कुछ नहीं स्टडी किया और क्वेश्चन करता हूं तो लगता है कि तुक्के लग रहे हैं. निखिल, व्हाटएवर हैज हैपेंड, just focus on consolidating what you have read so far. There are people who don't take any coaching and crack the exam. There are people like that also. So it's okay, you are not out of the race. 2 weeks, give your best shot. Last day कौन सा, last day में क्या करना है, last 3 days में क्या करना है, this is something which we will be discussing when we come live again. As I said, 15th July 9 p.m. we will be coming live again. Me and Rajiv sir. Sir will be joining from Canada. Amir Admi, big man. I will be joining from India. So हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे लास्ट वीक स्ट्रेटेजी एंड लास्ट फ्यू डेज में क्या करना है. Please can you provide list of must know topics? I always do. Every year I do. This time also I will put on my Telegram. In fact, tomorrow is Sunday, so I will be posting on my Telegram. तो क्या हमें अभी भी जीटी देना चाहिए? Runu saying, if as I said, no GT after 21st. Till 21st, you can give at least 2 GTs. About GT, focus on revision, focus more on the theory part, but no day should pass where 1.5 hours of MCQ, 1.5 hour, roughly 70 to 80 MCQs with explanation. Good enough. फैमिली को मिलने, यस 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 ऑब्वियसली. अराइज के 3 जीटी में फिर भी डर लग रहा है. आयुष, you have got very good scores. At the same time, be greedy, push for 200 in the last GT before you sit in the exam. Doable, है ना? So I hope you all benefit from it. I tried to share my perspective. गलत, ये सही गलत नहीं है. What I tried to do was to get into your shoes. I'm not claiming this is the only way, but if you're following your way and you feel that something out of it can be incorporated, use that. This video will go up. You can listen to it again if you have joined late. I have tried to explain the best I can. और इसका एक फ्लो चार्ट फॉर्मेट मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा. So do watch it out, है ना? टेलीग्राम चैनल नेम अभी यार ऐसे कैसे बताऊं मैं. FMG अवेंजर्स के नाम से है, या मुझे व्हाट्सएप कर देना, सॉरी इंस्टा पे मैसेज कर देना. आई विल शेयर इट विद यू, राइट? बट थैंक यू Manav, thank you Bright Medico Makers for giving me this opportunity to interact with all these young bright people. देखो यार, जाने से पहले ना एक रियलिटी चेक सुन के जाओ. कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, कुछ का नहीं होगा. हमारा सिलेक्शन होगा, और जिनका नहीं हुआ है हम उनका साथ में बैठ के उनको भी पार करवाएंगे, और साथ में अपनी नीट पीजी की तैयारी भी करेंगे. देखो, रियलिटी है लाइफ का, नॉट एवरीवन इज गोइंग टू पास, बट एट द सेम टाइम इवन इफ 10 people आर पासिंग आउट ऑफ 40,000, माय नेम शुड बी अमंग दोस 10 people. इट इज स्टिल इन योर हैंड. You have come into this world, you have just forgotten your powers, you have forgotten your energy, you have forgotten, you have become mediocre. There is no such thing as a mediocre doctor. A doctor can never be mediocre. The simple reason that you are reading 19 subject and are able to, touch 150 mark in your mock exams. लोगों का 4 में फट जाता है. You people are able to read 19 subject and you are giving your best shot. You are not mediocre. It is just that the exam pattern is like that exams are meant to fail you. But we are also very stubborn. हम लोग भी ढीठ हैं, हम भी पास होंगे और जरूर होंगे. ये नहीं सोचना है कि क्या होगा. देखो, नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं हुआ यार, कोई बात नहीं. Life doesn't stop. I have wasted 2 years of my life, and trust me, life has given me opportunity to run, and I've run well. अब मैं थक गया हूं, अब मैं आराम से काम करता हूं, but life gives you that opportunity, you understand? So life will give you that opportunity, but don't let that situation come. My selection will happen. I will wait for your result.
आई विल वेट फॉर योर मैसेज। एक मैसेज करना मुझे, सर हो गया। मजा आएगा, आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा। आपको ज्यादा आएगा, मुझे थोड़ा सा आएगा, बट मजा दोनों को आएगा, है ना। आई डोंट नो यू, मेनी ऑफ यू, आई नो मेनी ऑफ यू पर्सनली, मेनी ऑफ यू आई डोंट नो पर्सनली, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी। विल बी मीटिंग अगेन फॉर नीट पीजी। अभी तो बहुत आगे इंटर्नशिप में हमने मीट करना है ना। अभी हम लोगों ने, वी हैव टू बी बेटर डॉक्टर्स, एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट entrance exam is only one stepping stone of success. It's not the end, it's the beginning. So let the beginning happen, है ना। तो you all will pass, we all will pass, we will do well, and टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया 24 घंटे में कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है। आप 1 घंटा रीलों के ऊपर वेस्ट करके भी एंट्रेंस क्रैक कर सकते हो। द ओनली क्वेश्चन इज, आर यू willing to do that? Okay, all the very best. And yes, Abhinandan, medicine session, I know. The only thing is, if I could share the things I have to do at so many levels, that I sometimes end up in knots, but I will, it's my promise, and I will do hematology leukemias video। हेमेटोलॉजी, ओके। जो लोग पूछ रहे थे सर मेडिसिन में क्या रह गया है, 8 वीडियोस में डाल चुका हूं। हेमेटोलॉजी वीडियो विल बी देयर विद ऑन्कोलॉजी। leukemias I will cover in a flowchart manner. Keywords for CML, CLL, AML, ALL, multiple myeloma, and other Waldenstrom macroglobulinemia. Keyword approach, डिटेल में नहीं, keyword approach covering PYQ and approach to anemia, approach to bleeding disorder. उसमें मैं pathology वाले points add करूं, right? So it will be a short video, roughly about 45 minutes to 1 hour, but it will cover at least 25 to 30 PYQs and PY topics in one. So that video will come up with the PDF, right? That is my promise. Monday के बाद अगर नहीं हुआ तो मुझे पता है, मैं वेडनेसडे को मैं आऊंगा लाइव, तो आप लोग मेरा ट्यूसडे को आऊंगा लाइव, तो जान खा जाओगे। तो आई विल पुट इट अप बिफोर आई लीव, बिकॉज आई हैव टू ट्रेवल फ्रॉम ट्यूसडे onwards, right? Neurology is already there, pre, just have a look at it. Apart for that, other systems and other things, you can always message me. See, I don't claim I know everything, but about my subject pediatrics I know a bit, about preparation I know a bit, about medicine I know a bit, so you are most welcome to ask about it, right? All the best। और बैठे नहीं रहना, मोटिवेशन वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, एमसीक्यू सॉल्व करने से और थ्योरी पढ़ने से एग्जाम सॉल्व होता है, याद है। इंटरव्यू में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।